and I must thank the organizers uh, for bringing this concept. And of course, we have to now fix the where the pathology lies, and the tests which are even psychological tests and other neuropsychological tests should be able to point out that. So I welcome Dr. Pooja. Thank you. Ranjan, if you want to say anything. Yeah. Very good morning and Merry Christmas to all of you. It's my proud privilege to be part and chair the session on National Seminar on the Mental Health Relevance of the Brain Science for Disability Advocacy and Inclusion, organized by the Indian Medical Association is Delhi branch, Monovikas Charitable Society, Delhi Psychiatric Society. So we'll be having a fascinating discussion. And I think the speaker will do the justice, Dr. Pooja Jha Nair, and she will speak on the brain lobe function of SLD and ADHD. The stage is all yours, Dr. Pooja. Over to you. Thank you. Thank you so much. Thank you, Dr. Ro. So I think I will be comfortable with the hand mic. Yes. I'll start with that. So yesterday, as I already told you, it's a wonderful topic to discuss. And Dr. Nachiketa already did justice to the topic, which was actually assigned to me. I think you all are more clear that definitely brain has a role to play in childhood disability and developmental delays. Anybody has doubt about it? Sure. So I definitely share one or two evidences of that by sharing certain research work. But my whole talk is going to be around that, okay, we know that brain has a coordinate, but can we always go for MRI? Can we always do fMRI or CT scans? May not be possible. So I'm going to present to you a model, a test which has been developed recently, which can evaluate all this. And I will also talk today what can be done, what are the brain-based interventions available very much in India, and maybe you people can utilize that. Can we have the PowerPoint? So I want to begin with a beautiful definition given by Dr. J.P. Das. I cannot start this session without taking his name. He is my guru. And Dr. J.P. Das is definitely a famous name in the field, a senior most psychologist. So once he was taking a session in China, and a girl student came from the crowd and asked him, I just want to make sure that you are still alive. He laughed at her and he said, why did you ask her? He said, all the psychologists whose theories we are studying, none of them they are alive. So I really want to feel that you are alive or not. So Dr. J.P. Das, as I just now said, because of his age, he's very famous. He's 96 years old, by the way. He's a Canadian psychologist. And beautifully he says that, okay, can we go for the next slide? Because I think this is not working. This way, sir. Projector. No. Can you press the next button? It's okay. ये चलेगा Sorry. Okay, this is Dr. J.P. Das. Go to the next slide. No, my memory is not so good. I can't remember such a big definition. Okay. Okay. Did you press something? Okay. Thank you. A brain-based approach is not only related to how intelligence works, but it opens the door to understanding the mind and hence the consciousness. I think we human beings, whether we are with disability or so-called regular people who are sitting in this room and connected with us online, we all are here for a larger purpose. We all want to find our consciousness. And intelligence is a very crude term to explain just the consciousness. One may say that the mind is not an eclectic collection of intellectual functions of the brain. Would you ever say that mind is just a collection of certain experiences? What do you feel? Mind is larger or the brain is larger? Thank you to say that, mind. Brain can be sometimes, as I said yesterday, just a hardware. Just a collection of, certain tissues and all. But we humans, we are so large
only because we used this hardware and collected our set of experiences that makes us different from each other. Rather, the ultimate goal of intelligence is to form a better view of the self and gives meaning to an individual's existence. And that's why we all are here. So if we talk in the context that we are going to deal with people with disabilities, definitely their advocacy would be more meaningful when they know what self they have. And that's why I must appreciate that Alok sir and Nimesh sir, they thought about this topic, that how we are going to connect brain and disability or advocacy. This is sir very much in his own Odisha house, okay, where he meets us. Student of Health Eisen and Vygotsky, very influenced by the work of Luria. How many of you have heard about Luria? B.R. Luria. Which theory he gave? Nebraska. Basically, factory of Which test? Okay, neurology. He has done lifetime research work on the brain directly. Okay, I think World War II gave him a lot of options of touching those brains directly, and he had the beautiful platform to study about that. Let me tell you one beautiful thing about Dr. J.P. Das. He changed his religion to meet Judaism. Okay, he changed because he was so influenced by his work. He said, okay, Hindu Christianity doesn't make a difference to me, but I want to meet this person, and he went to meet him. This is about Sir again, which you can really study to do justice to the topic which was given to me. Please, as I said yesterday, last 2 to 3 decades, lot of work in Western countries have been done to find out about the brain correlates related to ADHD and SLD. Please, this one research work is very much available for that. It is available on PLOS One, and please, it is free access. It's a peer-reviewed journal also, by the way. Finding reveals significant association between ADHD diagnosis and widespread changes to the maturation of the white matter fiber bundles and gray matter density in the brain. Okay, the brain circulatory level, the superior longitudinal fasciculus and the corticolimbic areas are dysfunctional in individuals with ADHD. अगर मैं बहुत simple language में बोलूं और आप लोग confuse नहीं होना चाहते हैं, तो definitely wiring और थोड़ी सी स्ट्रक्चरल लेवल पे डिफरेंसेस है एडीएचडी में. अगर नहीं होते तो दवाई देने से इतना अच्छा इम्पैक्ट कैसे मिल जाता, या माइल्ड एडीएचडी में इंटेंसिव बिहेवियर थेरेपी करने से इम्पैक्ट कैसे मिल जाता. एक सिंपल पेरेंटल ट्रेनिंग से वो इम्पैक्ट क्यों नहीं आ जाता. दैट वी ऑल हैव टू रिमेंबर. Similarly, there is one more beautiful study which is talking about frontostriatal and frontocortical brain abnormalities. We all believe, and this is a very common notion, that ADHD में frontal lobe is affected to some extent, and that's why regulatory mechanism is not very great. तो अगर हम ऐसा बोले colloquial way में, एक अच्छा फैन खरीद लिया, लेकिन इसमें रेगुलेटर नहीं फिट किया है. अब इस फैन का अगर मूव करता है तो फुल 5 की स्विंग पे चलेगा, अगर मूव नहीं करता तो आप इसको 1 इंच भी नहीं हिला सकते. एडीएचडी के साथ ऐसा ही होता है. हमारे पेरेंट आके हमें बोलते हैं, मैम सब जानने दो, संडे के दिन सुबह सुबह उठ के बैठ जाता है ये मेरे से पहले, और स्कूल वाले दिनों में मैं इसको बोलती रहती हूँ और ये उठता नहीं. मुझे हर चीज के लिए रिमाइंडर देना पड़ता है. सेम चाइल्ड है, संडे को ऐसा क्या हुआ कि उठ गया, और मंडे टू फ्राइडे क्यों नहीं जल्दी से उठ जाता, because those days are not his favorite days. So whatever leftover attention is there, 10%, he puts full of that on Sunday and he is alert. Same thing, SLP में एक beautiful research work है, काफी recent है, 2020 का ये publication है, और अगर आप इसमें देखेंगे तो left posterior cingulate and right retroscleral cortical activities reduced है. आपको पता है ये दोनों के दोनों जो बैठे हैं हमारे ब्रेन के अंदर, ये छोटे छोटे से हिस्से, ये दोनों हमारी सीनिक प्रोसेसिंग को टेक केयर करते हैं. ठीक है, उनकी देखभाल करते हैं. इसीलिए जो बच्चा नॉन वर्बल एमडी होगा उसको कभी भी बोर्ड में से आराम से कॉपी करना उतना आसान नहीं दिखता. अगर हम और साधारण शब्दों में समझें इसे,
तो क्या प्रॉब्लम है, नोट से कॉपी करने की क्या दिक्कत है, लिखा हुआ है उठा लो अपनी नोटबुक में लिख लो। एनीबॉडी, व्हाई द चाइल्ड फाइंड्स इट सो टफ? वेरी गुड, हम और थोड़े साधारण शब्दों में बोल पाएंगे। सो परसेप्शन, यस। While somebody is copying from the board, Huh. he has to take the impression in the mind and reproduce it. So he might take the impression right in the brain, but while reproducing, he might commit mistakes. चलिए सर, मैं थोड़ी कोशिश करूंगी, आप मुझसे बहुत सीनियर है, आपने काफी हद तक अच्छा बता दिया। बहुत सिंपल सी बात है, आपका बोर्ड होता है वर्टिकल, करेक्ट? अब ब्रेन को वर्टिकल पोर्ट से इंफॉर्मेशन उठाकर आपके हॉरिजॉन्टल पोर्ट पे लेके आनी, नोट को खड़ी नहीं है, नोट को लेटी हुई है, करेक्ट? ये थोड़ा डिस्टेंस पे है, आपकी नोटबुक आपके मुश्किल से 1 फीट के डिस्टेंस पे है, वो भी कभी कभी कुछ बच्चे बहुत झुक कर लेते हैं, करेक्ट? तो अब आईज को एकोमोडेट करना है, आपके लेंसेज को डायलेट करना है, स्क्वीज करना है, और वो भी इतने रेट पे कि मैं फटाफट 1 मिनट में 10 शब्द लिख पाऊं। ओके, क्या करूं, मेरी तो स्क्रीनिंग प्रोसेसिंग वाली एबिलिटी ही खराब है, मैं कैसे कर लूं? इसके अलावा सिर्फ यही नहीं गड़बड़ रहता, मेरे एसएनटी वाले बच्चों के साथ में बहुत हद तक वर्किंग मेमोरी, टेम्पोरल लोब का भी बड़ा रोल हो जाता है। आप बड़े प्यार से कॉपी कर लेते हैं SPATIAL, भाड़ में रहा कैसा शब्द है, क्या सुनाई देता है और उसका मतलब क्या है, आप सीधे उठाते हैं अपनी नोटबुक में SPATIAL लिख लेते हैं। मेरे बच्चे की दिक्कत SPA, उसको एक बार में इतने सारे लेटर्स को होल्ड करना ही नहीं आता, इसीलिए a child with borderline intelligence can copy better, उसका रोट मेमोरी, सर हमने कितनी बार की है, लो लेवल ऑफ इंटेलिजेंस है लेकिन मेमोरी बहुत अच्छी है, उसकी नोटबुक देखिए ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग से फुल है, बट मेरा एसएनडी नहीं कर पा रहा है। Everyone is able to make sense out of this? Anything which went overhead process? Okay, very good. So as I already said, I will not talk a lot about brain correlates because मेरा मानना है कल हमने बहुत डिस्कस किया है, मैं चाहती हूँ कि मैं उसके बारे में बात करूँ जो कि इसको इवैल्यूएट करने के लिए हमारे को इजी करेगा। So it all started by the way in 2008 when me, Dr. J.P. Das and Swagatika and one or two more like-minded people started discussing कि हमारे IQ टेस्ट बहुत पुराने हैं और इन IQ टेस्ट के बेसिस पे कभी-कभी इंटरवेंशन प्रोग्राम बनाना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन I don't know fortunately या unfortunately मैं बिल्कुल सरकारी पर्सन नहीं बन पाई, तो फंडिंग कहाँ से आएगी, हम कैसे क्या करेंगे, ये टीम कैसे बनेगी, but we underestimated the power of the Das sir. So he collected a beautiful team and we all got together. We started working towards it. We have Dr. Braj Bhushan, who is from IIT Kanpur. Mrs. Renu Goyal is very much from Delhi and she runs an institute called Kidicious. And then Dr. Prakash Pagatanya, another major name in the field of specific learning disability, by the way. Oh my God, great mathematician. Professor Yuval Das, a very famous name from JNTU, by the way, he's retired now. And Dr. Das was his PhD student. अगर आप इनका चेहरा देखो और एनालिसिस करें, ये इतने ही स्ट्रिक्ट हैं, इतने ही स्ट्रिक्ट हैं, इनको नंबर वर्क में कोई गड़बड़ नहीं चाहिए, ठीक है? He wants to analyze everything perfectly. ये मैं छोटी सी नाचीज और ये है मेरी फ्रेंड स्वागतिका और हम दोनों एक बेसिक मोटिवेशन फोर्स के इसके लिए और हम इस पे काम करना चाहते थे। हमने डेटा कलेक्ट किया है इन सारे स्टेट से 5 to 20 इयर्स के लिए ये टेस्ट है और ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है। इनफैक्ट एम्स दिल्ली डॉक्टर सुजाता सतपति she also got kind of involved with us and she collected data for the clinical population. So हम ये टेस्ट को ADHD, SMD diagnosis, intellectual disability, autism diagnosis के लिए भी यूज करते हैं। Let me correct myself, autism के diagnosis के लिए नहीं, autism के cognitive abilities को परखने के लिए। नहीं तो पता चला हमने DBIT यूज करके बच्चों को ऑटिज्म का सर्टिफिकेट पकड़ा दिया। Don't do that, please. This was a simple process. The best thing is that it has a quick version also, which can be done in just 40 minutes. But please, otherwise, like any other good test, it's a pure neuropsychological battery, which even gives you an IQ score. So it takes about definitely 2.5 hours. So ideally, should be done in 2 days.
One part on day 1 and maybe the other part on second day. What is the model? Why I want to call it brain-based intelligence test? As I said, it is totally based on the neuroscience theory. How many of you have heard about past model of intelligence? हमने सुना है? अच्छा, very good. तो कोई भी बताएंगे? Would you like to tell me what is past? The acronym FAST stands for planning, attention, simultaneous and successive assessment. Very good job. Very good job. So as you said, planning, attention arousal, simultaneous and successive. अगर हम ये चार बोलते हैं तो ये चारों में हमारा पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम इंक्लूड हो जाता है. प्लानिंग आपका फ्रंटल लोब हो गया, अटेंशन अराउजल आपका ब्रेन स्टेम, एंड डेफिनेटली सम पार्ट ऑफ फ्रंटल लोब अगेन, क्योंकि अटेंशन देना आपके ब्रेन स्टेम का काम हो सकता है, लेकिन उस अटेंशन को रेगुलेट करना फ्रंटल लोब ही करेगा. कल मैंने बोला था ना, वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, बिना उसके आप कुछ खास कर नहीं सकते हैं. आपका पेराइटल, ऑक्सीपिटल एंड टेम्पोरल, ये तीनों लोग मिलके आपको इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए बताते हैं. ठीक है, हम इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कैसे करते हैं बाय द वे? जैसे कि जब आपने इस पिक्चर को देखा तो क्या आपने इस पिक्चर को एक साथ देखा या पार्ट बाय पार्ट देखना शुरू किया? पार्ट बाय पार्ट. अगर मैं आपको बोलूंगी क्लोज योर आईज तो आप पार्ट याद रखेंगे या होलिस्टिक? इसको बोलते हैं साइमल्टेनियस प्रोसेस. ठीक है, जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, when I am talking over here, can you listen to me one at a go or one by one? Can I say 10 words together? No matter how fast I speak, I cannot say 10 words together. So speech is successive processing. ठीक है, एक और अच्छा एग्जांपल दे देती हूँ. We females are very good in simultaneous processing. हम एक साथ किचन में स्टव के पास खड़े होकर 4 बर्नर पे 4 टाइप के डिशेस विदाउट मिक्सिंग कर सकते हैं. डू वी डू दैट? और जब हम ये कर रहे होते हैं तो साइमल्टेनियसली हम ये भी सोच रहे होते हैं मेरे बच्चे ने नहा लिया होगा, मुझे उसे एक रिमाइंडर देना है. करेक्ट? मेल्स दे आर टू गुड इन सक्सेसिव प्रोसेसिंग. चलो इमेजिन करो अगर यहाँ पे जितने भी मैरिड लोग हैं, इफ योर हस्बैंड इज इन द किचन टू डू द कुकिंग, no, somebody always say no, don't want. Correct? What happens if males are in the kitchen? Total mess. Wow, that's a lovely word. And why did mess comes? नहीं, मैं मैथ नहीं करता हूँ. सर भी नहीं करते. चलो ओके, हम कुछ मेल्स को छोड़ देंगे इसमें से, बट मेजॉरिटी वुड एग्री कि हम मेल्स बात, क्योंकि वो जब तक तेल चढ़ाएंगे, ठीक है, तब तक साथ ही साथ प्याज और सब्जी भी कट करेंगे. उनको पहले सब कुछ कट करके एक प्लेट में सजा के रखना है. वो तब कढ़ाई चढ़ाएंगे, तब तेल गर्म होगा, उसके बाद वो उसमें से करी तैयार करेंगे. Everyone is clear? Do you think you can now make sense out of successive and simultaneous processing? Extremely important. Our children, they get stuck at this level. They take information. वो इतने बुद्धू नहीं है कि information ले नहीं सकते. वो information को लेते हैं, लेकिन प्रोसेसिंग के वक्त में थोड़ी गड़बड़ शुरू हो जाती है. That's what we want to measure. पास्ट थ्योरी के ऊपर ये टेस्ट में हम पहले कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी को चेक करेंगे कि बच्चा शिफ्टिंग कितने आराम से कर सकता है. आप एक ही क्लास में बिठाकर उसको मैथ्स पढ़ा रहे होते हैं, सडनली मैथ्स की टीचर मिसेस चड्डा अपनी क्लास खत्म करती है क्योंकि बेल बज गई. ठीक है, वो जाते जाते इंस्ट्रक्शन लेके जाती है, बच्चों पूरा लिख लेना. ठीक है, इनकम्प्लीट वर्क के लिए तुमको डांट पड़ेगी. वो निकल गई और मिसेस मल्होत्रा आ गई अंदर, इंग्लिश की टीचर. करेक्ट? She loves the whole board. And other children somehow by hook and crook they have finished. My child is ADHD to give some. जान दे, मैं तो लिखूं, मुझे नहीं लिखना. ठीक है, मेरा ऐसे भी सोच रहा होता है पढ़ी आज भी डांट मुझे नहीं, मेरा काम तो कंप्लीट नहीं है. ठीक है, बाकी जो मेरे सुपर एवरेज है वो सब समेट के अंदर रख चुके होते हैं, इंग्लिश की बुक निकाल रहे होते हैं. मेरा ऐसे भी बैठ के सोच रहा होता है अब क्या करूं मैं. तो वो क्या करेगा, वो इधर उधर देखना शुरू करेगा व्हाट द अदर्स आर डूइंग. एंड मीनवाइल माय टोनी से मैम लुक एट राहुल, ही इज अगेन डिस्टर्बिंग मी because he is looking at it. He is trying to find out what's happening now in the class. Shifting. They cannot do shifting very easily. Which other condition comes to your mind who cannot do shifting very easily?
Very good job. Wow, morning अच्छा breakfast मिला है. Correct? Yes. Children with autism also may not do shifting very easily. उनकी cognitive fluidity थोड़ी गड़बड़ होती है. उन्हें sameness पसंद है, predictability पसंद है. अगर हमें clear में data मिलेगा scientific way में, we will be able to work on that part also. These are the subtests which will evaluate cognitive flexibility, inhibition control. I hope मैं जैसे inhibition control बोलूंगी सबके दिमाग में ADHD सबसे पहले आ जाएगा. ठीक है? I hope people are aware about something called frontal lobe syndrome. सुना है कभी आपने इसके बारे में? कभी-कभी जेनेटिकली भी हमको हो सकता है, कभी-कभी आफ्टर बर्थ डैमेज के बाद, जैसे कि बर्थ क्राई डिले था, हाइपरमोबिलिटी था, एक तरह से उसी एरिया में हुआ, तो भी हमको फ्रंटल लोब सिंड्रोम हो सकता है. We have 2 cases out of 500 children to whom we support who are having frontal lobe syndrome. They are also very impulsive. बहुत जल्दबाज होते हैं, ठक से कुछ करना चाहते हैं, सोचते नहीं है, एग्रेसिव बहुत हो सकते हैं, सेंस ऑफ रिमोर्स बिल्कुल नहीं रहता, जिसको हम पछतावा बोलते हैं कुछ गलत करने के बाद, ये इनके अंदर बहुत कम रहता है. ये सारे टेस्ट वर्बल स्ट्रूप, नंबर रिवर्स, विजिलेंस, सब हमको इसके बारे में मेजर करके बताएंगे. Extremely important working memory. इस टेस्ट में सेंटेंस स्पैन एंड डिजिट स्पैन बहुत अलग तरीके से है. तो फॉर एग्जांपल I will ask my child कि मैं आपको थोड़े से सम्स बताऊंगी और आपको बताना है whether it is true or false. ये सब बताने के बाद में एंड में मैं आपसे बोलूंगी सारे आंसर्स जो मैंने बोले वो आपको रिपीट करने हैं. फॉर एग्जांपल 4 plus 1 equals to 7. True or false? Okay. 9 plus 5 equal to 10. What are the two answers? 7 and 10. I didn't say that you have to tell me the correct answer, isn't it? I just told you, you process it, but still to tell me at the end my answers, what I said. Okay? So this is span. In IIT Kharagpur, beautiful research is going on right now whether human being spends more time in the processing or for the last content or the note memory. Okay? Or how does processing impacts the ultimate answer? How many of you know about the importance of working memory? What is working memory, by the way? Short term, okay? कोई और? चलिए समझ लेंगे दादा. शॉर्ट टर्म के प्लेटफॉर्म पे काम करने के लिए हमें वर्किंग मेमोरी की जरूरत होती है. जैसा कि नेम बोलता है वर्किंग मेमोरी, काम करो भूल जाओ. करेक्ट? मैंने अभी तक सुबह से बहुत कुछ बोला है. यहाँ पे कोई भी एक जो वर्ड बाय वर्ड रिपीट करके बता सकता है? सुनने रहते मेरी बात? सुन रहे थे ना? But no human can remember like that. What you did when I was talking, you interpreted. आपने मेरी बातों का मतलब निकाला और मेरी समरी आप याद रख सकते हैं. Exactly वही है वर्किंग मेमोरी. मैंने बोला 5 plus 2 plus 4 plus 9. What if अगर आप 5 and 4 भूल जाए? आप बता सकते हैं मेरे आंसर को भी कभी भी. So working memory is the capacity to hold information until you solve it, until you process it. After processing, you forget that piece of information. तब जाके वो शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए इंफॉर्मेशन रेडी होती है. फाइन? क्लियर? प्लीज रिमेंबर वर्किंग मेमोरी अगर पुअर होगी तो रीडिंग डिसऑर्डर होगा, राइटिंग स्पीड स्लो हो जाएगी, बच्चे नहीं कर पाएंगे. तो आप कितना भी उन्हें प्रैक्टिस देंगे ना, चल बेटा आज तू 10 लाइन कॉपी करके ना और 10 बार कॉपी कर. सॉरी, वो 10 लाइन और 10 बार कॉपी करने में वो 10 घंटे लगाएगा और उसके बाद भी आपको कुछ नहीं मिल पाएगा. So let's be the smart workers, smart special educators and psychologists, work on their working memory. High order thinking, क्योंकि ये टेस्ट 20 साल तक की उम्र के लिए है. हम उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग को चेक करना चाहते हैं क्योंकि इसके बेसिस पर HR ह्यूमन रिसोर्स अपने लोगों को हायर कर पाए. So crack the code and predicament are two tests. Predicament is totally social judgment based test. It's a qualitative one. इसके लिए कोई स्कोरिंग नहीं होती है, कोई मार्क्स नहीं दिए जाते. ये पूरा सोशल जजमेंट एक पर्सन का कैसा है उसे मेजर करने के लिए है. Supplementary test, because we want to know if somebody is really struggling more in reading and all. There is one thing called rapid automatized naming. सबको RAM मालूम है यहाँ पे? Rapid automatic naming, the speed with which we can identify an object or any letter or number
and then label it as quick as possible correctly. कितने डायमेंशन है? एक स्टिमुलस है, आपको उस स्टिमुलस को लेबल करना है, स्पीड चाहिए, करेक्ट रिस्पॉन्स चाहिए, स्पीड एंड करेक्ट रिस्पॉन्स। क्यों जरूरी है? अगर रैंक हमारा पुअर है तो क्या होगा? रिस्पॉन्स गलत जाएगा। ओके, व्हाट एल्स? एक्चुअली रिस्पॉन्स गलत जाने का कम चांस है, लेकिन मैं हेजिटेशन में ज्यादा रह जाऊंगी। ओके, जिसका रैंक पुअर होता है वो कैसे रीड करेगा? वो ऐसे रीड करेगा, पी पी ए आर आर के। ओके, lot of hesitation to identify a letter or a number itself. So by the time he will come to K, what will happen? Can he club all of them together and say the word path? No, he cannot. Okay, क्योंकि time taken ज्यादा हो गया। जब हम ये सारे टेस्ट करते हैं तो हमको क्या क्या स्कोर मिलते हैं? हमें वर्बल प्रोसेसिंग स्कोर मिलता है, नॉन वर्बल हमें स्पीड पता चलती है किसी बच्चे की, और सेल्फ रेगुलेशन पता चलता है। टू मेन बैटरीज है इसमें, एक है प्लैनेट्स, तो एक्स वर्ड आया है एग्जीक्यूटिव फंक्शन से, एंड द सेकंड वन इज इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन, जो कि हमारे साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग को मेजर करेगा। This is the record form, and this is what I want to talk about. Why this would be different, or why this should be the new approach. आप देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे ये BDIT का record form है, और can you see FS over here? I know it's very small for the people who are sitting at the back. It's only 54. Oh my God, the child is having mild intellectual disability. 54. छोड़ दूं, अब क्या करूंगी? सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से चलो ठीक है, स्क्राइब दे देंगे, रीडर भी दे देंगे, प्रॉम्प्टर भी दे देंगे। 10th और 12th हो गया, पर जिस दिन बच्चा मार्केट में आया उसका क्या होगा? कौन एक्सेप्ट करेगा? आई फील इफ यू लुक एट दिस स्कोर, कैन यू सी एसएचएफ शिफ्टिंग, इट इज 116। मींस इस बच्चे को मैं बहुत सारे काम दे सकती हूँ जॉब के हिसाब से, यहाँ पे शिफ्टिंग की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, पुराने जमाने में हमारे टेलीफोन एक्सचेंज वर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डेक्सटेरिटी एंड शिफ्टिंग। अभी आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, बट देयर आर मेनी अदर जॉब्स व्हिच वी नीड टू फाइंड आउट। डेफिनेटली इस बच्चे का विजुअल स्पेशियल बहुत पुअर है, इट इज ओनली 42। इसका अटेंशन बहुत पुअर है, 59। वर्किंग मेमोरी बहुत पुअर है, इसका कॉन्फ़िगरेशन 60 है, मतलब कि इसका ओवरऑल साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग भी काफी पुअर है, लेकिन इसकी सीक्वेंसिंग बहुत अच्छी है, 98 एवरेज स्कोर। तो देखो दो स्कोर बहुत अच्छे हैं, एक है इसकी सीक्वेंसिंग और एक है इसका शिफ्टिंग। तो मैं इसको डेफिनेटली कोई भी काम जो कन्वेयर बेल्ट के हिसाब से चलता है, स्टेप बाय स्टेप वाला, दिस चाइल्ड वुड डू एक्सीलेंट इन दैट। So not only for your intervention, but to give a guideline to a parent that what all options are open for him, what you can train, that can be possibility. Actually, this particular test gives you lot of scores, by the way. Can you see? Cognitive flexibility, inhibition, working memory, configuration, sequence. इन सब के अलावा अगर आप इतने सारे scores निकालेंगे, तो आप ऐड कर करके पूरे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, पूरे, and that will give you a lot of benefit. I'm not here to market something, trust me. I'm here to let you know that after 1967, when we had a great test, I really value balance intelligence a lot. But then somewhere, you know, when really Prime Minister said "Make in India," it gave us a jolt that, you know, why our items cannot be there? Why can't we generate something which is totally Indian and something which can give us more holistic results? Now, I got the result, and we have understood, I think, in my last 10-15 minutes, that we need to do something about it. Cognitive error है, तो करें क्या? मैंने कल एक क्वेश्चन पूछा था कि ADHD है तो हम क्या करेंगे? तो लोगों ने बोला कि हम उससे बहुत सारा फिजिकल वर्क करवाएंगे, हम उसको बिहेवियर चार्ट दे सकते हैं, बट ब्रेन में गड़बड़ है, हर चीज के लिए मेडिसिन भी नहीं है, माइंड है तो मेडिसिन भी नहीं है, चलो मेडिसिन भी दे दी, तो मेडिसिन ने मुझे पोटेंशियल दिया, उस पोटेंशियल को यूज करके मैं करूँ क्या? मेरे स्किल में तो डेफिसिट आ चुका है, इतने दिनों से मैं क्लास में भाग रहा था, मैंने टीचर को ध्यान नहीं दिया, मुझे लिखना नहीं आया, अब मेरे को मेडिसिन पे अटेंशन है, नाउ व्हाट शुड आई डू? So there are 3 programs which I will tell you in brief, because it's like an ocean which I have been asked to swim.
it would be difficult. So there is one program called Cogent. Cogent is Cognitive Enhancement Training Program. If you will go on website, childhood learning programs, you will get the whole description. Cogent basically has 5 modules, and these 5 modules trains you in how to reduce your inhibition. आपको ब्रेन के लेवल पे कैसे सिखा सकती हूँ मैं कि अपने इनहिबिशन को कंट्रोल करो. हर बार पेरेंट को बोलना पड़ता है ऐसे में यहाँ पे नहीं वहां पे कब ये क्या किया यहाँ करता. अगर मुझे मेरी अलर्टनेस मिल जाए या सेल्फ रेगुलेटेड अटेंशन मिल जाए तो एडल्ट्स को बार बार मुझे कुछ कहने की जरूरत कम पड़ेगी. आई डोंट से कि नहीं पड़ेगी, कम पड़ेगी. सिमिलरली कोजेंट आपको ये भी सिखाता है कि विजुअल स्पेशियल रिलेशनशिप डेवलप कैसे होता है. थर्ड एंड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, लैंग्वेज. स्पीच आना कोई बड़ी बात नहीं है, लैंग्वेज आना. हाउ मेनी ऑफ यू agree to me that actually autism does not have a speech delay? Okay, autism doesn't have a speech delay. Their problem is they are not motivated to talk. आप अच्छे से जानते हैं कि ऑटिज्म में क्लासिकल रिग्रेशन होता है. 8 months 9 months की एज पे ताता नाना जैसा मेरे तेलुगु के वर्ड है, मगर जैसे मम्मी बोल देना, पापा मम्मी नहीं सॉरी, जैसे कि आ जाओ दे दो तू ऐसे वर्ड्स बोलता है बच्चा. पर 1.5 से 2 years के बीच में उसका रिग्रेशन होता है जिसको हम क्लासिकल रिग्रेशन बोलते हैं. ये सेम बच्चा जब स्पीच पिक करता है तो एबीसीडी अच्छे से बोल लेता है, कलर के नेम बोल लेता है, शेप बोल लेता है, राइम्स की हमिंग कर लेता है. तो उसका क्या जाता है ये बोलने में, मम्मी मुझे भूख लगी है कुछ दे दो, अम्मा सुपर, क्या जाता है उसका. जो चीजें सेम थी उसको लेबल करने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन सोशल चीजें जो बदलती रहती हैं उसको लेबल करने के लिए उसे प्रॉब्लम हुई. क्यों? कि मम्मी रोज कपड़े बदल देती है, मम्मी को गुस्सा आता है तो एक तरीके से बात करती है, प्यार में एक तरीके से बात करती है, फेशियल एक्सप्रेशन 1000 बार बदलती है. तो मुझे मालूम है कि ये एक मेरी फेवरेट केयर टेकर है और ये मेरी सेफ पर्सन है, पर इसको मुझे मम्मा बुलाना है नहीं मालूम. So language, Cogent helps you to develop the language processing skills. Extremely important. Please, autism may all speech therapists, with all due respect, don't work on articulation. उनको पता है articulate कैसे करना है. उनका problem है motivation to speak. मुझे बात करनी क्यों है? मैं क्यों करूँगा? And plus the structure of the language. उसको वो सिखाने से हमको ज़्यादा benefit होगा. PrEP. PrEP is a program which is called as Paths-based रीडिंग एनहांसमेंट प्रोग्राम. ये प्रोग्राम महाराष्ट्र डिस्लेक्सिया एसोसिएशन ने काफी सालों तक यूज किया. उसके बाद ये प्रोग्राम दास सर ने हमें दिया जिसको हमने मॉडिफाई करके और यूजेबल बनाया है. इन दिस प्रोग्राम वी हैव 8 टास्क एंड द ब्यूटी ऑफ द प्रोग्राम इज ये आपको सिर्फ पोटेंशियल डेवलप करना नहीं सिखाएगा, ये आपको ब्रिजिंग सिखाएगा. क्लासरूम में एग्जैक्टली हम क्या कर सकते हैं. And the last and the recent one which was actually inaugurated in 2016 is math module. Math module basically आपको सिखाता है कि मैथ्स के लिए जो वर्किंग मेमोरी चाहिए वो कैसे डेवलप हो. आई होप मेनी ऑफ यू यूज म्यूजिक. कितने लोग म्यूजिक यूज करते हैं यहाँ पर? 1 2 3. ओके चलिए ठीक है. जो जब हम म्यूजिक यूज करते हैं तो आपने देखा होगा जिस बच्चे का अरिथमेटिक स्कोर पुअर आता है उसका डिजिट स्पैन भी काफी पुअर रहता है. कभी नोटिस किया है? चेक कीजिएगा. These things I think the psychologists should definitely pay attention to. मैथ्स के लिए आपको वर्किंग मेमोरी चाहिए, इंटरप्रिटेशन ऑफ द कंटेंट चाहिए, लैंग्वेज की बहुत जरूरत है. मैथ्स इज नॉट अबाउट ओनली नंबर्स, प्लीज रिमेंबर, नहीं तो वी विल डेफिनेटली स्टार्ट फेलिंग इन थिंग्स. ओके, these 3 programs teaches you in a very simple way what you can do to stimulate their brain in the right manner. Now when you know that there is research, we know that these areas might be affected, you diagnose ADHD or SLD, work around that. That's going to give you a lot of benefit. Okay, thank you. The slides would be available to you all, and you people can please go through this and see how you want to utilize it. I think I would request Alok sir, if people have questions, I would love to answer that. Sure. The chair is there. Mandi. Yeah. Yeah, persons are Close sir. Option
Thanks. Thank you, guys. That was wonderful. Besides the BBIT, which is definitely for pursuing, understanding, and using, my request is also to please follow the initial points that Gulari made about connecting the different conditions and the brain issues. OP, Ranjan, please, all yours. Uh, it is complete. Yes, yes, sir. Okay, sir. Uh, it is, of course, beyond our area of expertise. But what we can say is that the tests are the only thing which can distinguish between normal people and ADHD children. Uh, because at this stage, no brain imaging, no other tests are able to do that. So we should be very particular about this, and we need kind of validated tests new, because the older tests like Corners and others has been so old, and though we say that they are objective, but they are mainly rated subjectively. So this has been wonderful presentation. Ma'am have given the new kind of insights, and this BBT will obviously will be very useful for clinician, and we want that this kind of test should be used and in larger populations, and we can help out people. Thank you. Very nice. Any comment about you or Ranjan and anybody from the audience about the test? Of course, is wonderful to try and follow. But my interest for this seminar is also equally on connecting the brain functioning with specific conditions. Like she summarized so well, some of those evidences for ADHD and SLD. Absolutely, sir. Yes, sir. Mostly don't do that. Psychiatrists or even psychologists or special educators, you don't really connect. And that's the whole idea, as Pujari has seen and you won't see. That the whole idea is to try and get into the advocacy discourse, the idea of there being brain functioning issues with specific conditions. That's you. Yes, sir. Very true. And Ranjan will be commenting before, like we got the knowledge of much brain as ma'am was mentioning Luria. So Luria and Nebraska battery allowed us to map different functioning of the brain. Yes. So it is not that the things are psychological tests also tap into the brain functions. And as you have said, we should link this brain functions to the uh, testings so that it becomes more evidence based. And that is, as you have said, that is our job to map these areas. Thank you, sir. Ranjan, Sir, please. I had worked for with this intellectual disabled children and the neurodevelopmental disorder and published papers. And during our times, we don't have those gadgets and we don't have the facilities of the neuroimaging technique, especially the functional neuroimaging and localization of the symptoms. So, as described by Madam beautifully, so this generates lots of thought process to evoke, because we are in the genera of the 5G network, and that development will come across a long way. So this neuropsychological testing has to be validated with the newer imaging technique, as well as we have the probably the AI will be applied as mentioned already. So in those cases, we might get the newer information to plan and formulate our strategy as mentioned by Dr. Nimesh sir. So we have to go a long way, and as in this presentation, I'm really fascinated and learned a lot of things, especially concerning the BBIT's applications in the ADHD, SLD, and how innovative approaches can be tried in the long run. So thank you so much. And if there is any audience question, we can take those questions. Yes, boss. You are both with us online, but I find the questions from the audience if there are. So one request which I want to make all of you before we get into question answer, please wake up your research mindset. Okay? Don't think that you are only clinician. Yesterday already we all have paid attention to this. Actually, you guys have more data
then a researcher will sit. They have to artificially go and arrange. You people have on daily basis. A bit of change mindset would give a lot of things. Why can't we publish in Lancet? Why can't we publish in so many international peer-reviewed journals? There are very few things which you have to follow ethically, but you will have your name there, isn't it? Yes, we can ask questions. Like your answer. Not a question, but just a Please. request Yeah. to summarize the entire class. Okay. Okay. To summarize, it would be that we basically again talked about how the hardware, our brain, is definitely related to the software, which is our mind. We discussed that how mind is much larger than this brain, how we all are different from each other only because our bundle of experiences are different from each other. Okay, and this bundle of experience is only called mind. We discussed about some research work where very clearly in Western countries they have already shown that how in ADHD what areas of the brain are affected, in SLD what areas are affected. Then we talked about actually the test. By that time you had come, but still to recap, we talked about brain-based intelligence test, which is nothing but a basic neuropsychological evaluation. The norms are developed in such a way now that we will get a full-scale IQ also. The main emphasis is don't go by the total IQ number. Saying this doesn't mean that we will forget our system. Please, system के लिए कुछ categories बहुत जरूरी हैं. Yes, equality बहुत जरूरी है, but equity भी बहुत जरूरी है. हम ध्यान रखेंगे, हम बहुत sympathetic है, empathetic है, लेकिन हमें मालूम है कि मैं कितनी भी कोशिश करूं, 56 वाला अगर एक मेडिकल डॉक्टर बन जाएगा, तो मैं और आप सबसे पहले नहीं जाएंगे. हम डाउट करेंगे, ठीक है? तो इक्वालिटी के चक्कर में, इमोशंस के चक्कर में हम मिस्टेक्स ना करें, इसीलिए होलिस्टिक नंबर भी बहुत जरूरी है. बट नाउ इफ आई कम टू द चाइल्ड, बहुत जरूरी है कि उसकी क्या पोटेंशियल है. उसके लिए तो प्लैनेट प्लूटो हम बनाएंगे नहीं, रहना उसको मेरे और आपके साथ ही है, इसी धरती के ऊपर. तो इस धरती पे रहने के काबिल कैसे बनेगा? अगर हमारे पास एक प्रॉपर एनालिसिस है, तो खाली इसको रिपोर्ट एक सीबीएसई में भेजने के लिए, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में भेजने के लिए ना इस्तेमाल करें. ये टेस्ट ऐसा होना चाहिए जिसका रिजल्ट आपको गाइड कर पाए कि आप इसका इंटरवेंशन प्रोग्राम कैसे बनाएंगे. प्लीज, कॉग्निशन कोई साइकोलॉजिस्ट का क्या बोलते हैं जागीर नहीं है, ठीक है? कॉग्निशन कोई भी यूज कर सकता है, कोई भी स्टिमुलेट कर सकता है. आप एज ए स्पेशल एजुकेटर कर सकते हैं, आप एज ए ओटी कर सकते हैं प्रॉपर्ली, आप एज ए साइकोलॉजिस्ट कर सकते हैं. तो कीजिए, ये बहुत जरूरी है. अगर आपने ये नहीं डेवलप किया तो फिर आप मेरे बच्चे को डिपेंडेंट बना रहे हैं. आप एक और रिहैब सेंटर खोलने की तैयारी में हैं, ठीक है? ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बच्चा मेरे पास आया और अब आता ही जा रहा है. कोशिश कीजिए कि वो इंडिपेंडेंट कैसे बनेगा और मैं उसको मेरे पास से हटाऊं कैसे, है ना? दैट्स रियली इंपॉर्टेंट. यस, एनी अदर क्वेश्चन? Okay, that's a good question. No, by psychology at least. You must have analyzed this. क्यों नहीं कर सकते हैं? देखिए, अगर
whatever is the stress or the issue. So one thing that if you realize, जैसे मैडम ने बहुत सही कहा और आपने agree किया, to take that a step further, if you can all also inculcate that no report, no assessment, no diagnosis can be standalone or unique. मेडिकल डॉक्टर्स की भी आदत होती थी, वो खत्म हो गई, होपफुली एटलीस्ट होनी चाहिए. All of these helping professionals work has to be dialogue based and participate. तो जैसे आप सही कह रही है, साइकोलॉजिस्ट टेस्ट करें, उसकी हर एक एस्पेक्ट पेरेंट से डिस्कस करें, तो उसका कोई मायने नहीं. बिल्कुल सिर्फ स्कोर और रिपोर्ट दे देने से तो बात बनती नहीं है. And all that they are saying to keep emphasizing, and I'm saying this because I hope some of the presenters or at least some of the presenters for the rest of the day are here when we basic good practice model sharing. Surely, जैसे पुजारी ने किया, अपने काम की, अपने good practice की sharing करें, but try and keep in mind for everybody's benefit. How do we integrate the science which is available from brain sciences to our everyday practice? And I think Viraj gave a very good set of examples initially. So please एक बार और गौर करें जो टाइटल में हमने सोच के रखा है, not only for advocacy, पॉलिसी मेकर्स को, अपने सीनियर्स को, फंड मैनेजर्स को गाइड करना पड़ेगा, ये डिसेबिलिटी जेन्युइन इशू इसमें ऐसे होता है, ये नीड है. But even day-to-day practice for OTs, for special educators, for all of us. Please enter. ब्रेन साइंस का जो एविडेंस है वो हमें एक्चुअली हमारे रूटीन प्रैक्टिस में वीविंग करना होगा. We should really हमारी सोच हमारी थिंकिंग ब्रेन साइंस बेस्ड होनी चाहिए. And that's very evident from all our discourses if you see. Sham ya, and that's wonderful. There are not too many people either in psychiatry or in general psychology who actually have imbibed what I see in the every thought, every advice is linked to what's available in brain science. So that's Alokika, Dr. Indra, Dr. Alok और संगीता जी और हमारा मनोविकास टीम से कोशिश की है. तो आज के पूरे दिन में कम से कम कोशिश वो करिएगा कि हम लोग अपने डिस्क्रिप्शन में और अपने सवालों में ये गौर कर सकें कि हम साइंस ओरिएंटेशन कैसे लाएंगे और आईपीटी का मेजर साइंस कौन सा है, ब्रेन साइंस besides the other issues, you know? So there can be nothing except being rooted in brain science. But that was really wonderful. Thank you so much. Just to give you a very quick gist of what good practice or what kind of practice is effective for us. When a child comes and referred by anyone, we never do all the assessments only in the clinic. Please, we try to visit the child's home, their natural setup. Schools are with us. We support 78 schools. We try to go and see the child in the classroom. That gives you the holistic picture. Then come to the diagnosis, please. अगर आपको लगता है कौन जाएगा, किसके घर जा सकते हैं, हम कोई परमिशन देगा कि नहीं, वीडियोस पूछ लीजिए. आप पूछ सकते हैं वीडियोस एनालाइज कर लीजिए. मैं और आप एटलीस्ट जो हम साइकोलॉजी फील्ड से हैं, मैं और आप ये कहना हमारे लिए लग्जरी नहीं है कि हम बहुत बिजी हैं. नहीं, अगर आप बिजी हैं तो आपको अपना काम कट डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाया जा रहा है भाई. आप ह्यूमन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आपको माइंड डेवलप करना है किसी का. तो असेसमेंट होने के बाद में तब एक पेरेंट के साथ मीटिंग की जाती है बताने के लिए कि भाई हमको ये पता चला है, आप देखिए वैलिड है कि नहीं है. सबने वैलिड किया तो अब प्रोग्राम शुरू होगा. प्लीज थंब रूल, अगर 10 साल से छोटा बच्चा है तो बिना कॉग्निशन के मत छोड़िए, उसको सोसाइटी में जिंदा रहना है. और कॉग्निशन कहाँ से आएगा? आपके ब्रेन साइंस से आएगा. तो आपको कॉग्निटिव ट्रेनिंग देना है. मतलब मुझे मालूम है कि मैं किसी बच्चे को लेटर कैंसलेशन करा के खाली नहीं छोड़ सकती हूँ बाय इंप्रूविंग द अटेंशन स्पैन. मुझे उसको ब्रिजिंग करवाना है. तो आप उसको प्लीज जो भी हमारे अच्छे प्रोग्राम है टू इम्प्रूव द एजुकेशनल स्किल्स, आप उसे वो भी दीजिए. बिहेवियर को बहुत बार हम छोड़ देते हैं स्पेशल एजुकेशन में, मत छोड़िए. आपको एबीसीडी लिखनी आ गई लेकिन आपको बैठना नहीं आता, आपको एक सफाई से खाना नहीं खाना आ रहा, ऑब्वियसली पीयर ग्रुप मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा. एंड बिहेवियर डज नॉट मीन प्रॉब्लम बिहेवियर. ये बहुत बड़ा मिथ चलता है. बिहेवियर थेरेपी नहीं, मेरे बच्चे को तो कोई प्रॉब्लम बिहेवियर नहीं है, आपने क्यों बिहेवियर थेरेपी बोल दिया? प्लीज, बिहेवियर इज एवरीथिंग. आप यहाँ पे बैठ के सुन रहे हैं, वो बिहेवियर है. अगर आपको मैंने ये नहीं सिखाया कि आप बैठकर
कैसे मुझे सुनते हैं, लिसनिंग बिहेवियर क्या है, स्पीच भी वर्बल बिहेवियर है। स्किनर अंकल ने बहुत पहले लिख दिया था वो बात, ठीक है। तो अगर ये सब बिहेवियर है तो अपने को बिहेवियर थेरेपी पे भी ज्यादा ध्यान देना है। अगेन बिहेवियर थेरेपी किसी साइकोलॉजिस्ट की जागी नहीं है, ओके। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही लोग कर सकते हैं बिहेवियर मॉडिफिकेशन, बाकी सब भी कर सकते हैं। अपनी अपनी सीमाएं जानिए, एथिकल बनिए, सीखिए उस बारे में, इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। मे भी 4 पेयर कपड़े कम खरीदिए, मगर कोई अच्छे ट्रेनिंग प्रोग्राम है तो वहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए और सीखिए। दैट वाज माय चल पड़ेगा क्या? हम लोग कल से बात कर रहे हैं कि वी वुड लाइक टू बी more oriented to assessment and remediation of the function. लेकिन साथ साथ सिस्टम में बाबूगिरी अलग स्कोर चाहिए, स्कोर चाहिए, नंबर भी चाहिए, वो भी जरूरी है। लेकिन हमारा एक्चुअल वर्क आपका हमारा फंक्शनिंग पे फोकस हो, जहाँ जरूरी है स्कोर या सर्टिफिकेट के लिए वो करिए। तो वो दोनों घोड़े एक साथ आप राइड कर सको, ये इम्पोर्टेंट है। एंड ऑल्सो व्हाट वी सेड अबाउट इक्वालिटी इक्विटी को you require to kind of increase your repertoire to be able to do what the society needs and what we actually should be doing. Wonderful. You made it great one. Okay, thank you so much, Gurani. Wonderful. अच्छा भाई आलोक सर जी सर, मैं तो यहाँ बैठ के चाय पी रहा हूँ, कैसे सब देख रहे हैं। चाय है, चाय ब्रेक है। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज इसके बाद राजेश सर को उधर आई को ठीक है। ओह ये यस कल तक बहुतों को मिला था, मेरी नजर थी। थैंक यू। बोल देते कि ऑनलाइन डॉक्टर ओपी सिंह एंड रंजन, बिग थैंक्स। Any last Sir, word? thanks. It was really enlightening for us also, because I was just want to share a story when I went for a development of a instrument for ADHD. The scientists asked what you people are using, and when said corners, you do not, are you not ashamed using 80 years old, 64 years old instrument and no development? So yeah, final words. It's a fascinating presentation by Dr. Pooja Nair, madam. So we learned a lot. And thank you so much, especially to Dr. Nimesh Desai sir, who had been the past president of the Indian Medical Association, Delhi Psychiatric Society, and currently the president of the Monovikas Charitable Society. Thank you so much for inviting us. And it is a really great learning session, and sessions to follow are also equally interesting, like the good practice on inclusive education, self-advocacy, special education, open schooling, and therapeutics. So I would love to all this. Thank you so much, sir, for inviting us. If you can be here for next few sessions, please, if you have the time, please be with us. Thank you, Dr. O.P. Singh, Dr. Ranjan. I have one request. I haven't said this entire day yesterday. I think I did it once or twice. I have one formula if you don't know. Anybody will guess what is NKD? No question. Please, if all common India. You know? No question. Please. NKD. Right, sir. अभी चाय No, we can continue. अच्छा next. I think share, we will share here. अगर की बात है. Yeah. Yeah. We have to go back. Very good, yeah. Alien. Ah. They
please, I'm more than happy if anything else you want to know. I think पूजा को मैं 2025 साल तो वही गए जानते हुए, तो हर चीज को बड़े अच्छे से पूरे समय से पहले खत्म कर दिया, लेकिन Anything else Yeah, you want to but you know? can ask the questions. Okay, the question is, I'll give you that domain कि कहाँ से, that the intelligence वाले cognitive domain से तो पूछ सकते हैं. Even you can ask the domain from the teaching and learning. Okay, जो special education का goal है, वो भी इनसे सीख सकते हैं. She is also a special educator. Yes, like Slightly about the BBI. Something about cultural it is readaptation. cultural pre-adaptation has been done in India on 1700 children. And yes, that's was the leading person. All the items are designed by him, not by us. The variables Everything. Okay, okay. And then we have done the norm tender. and reliability and validity. Everything is pretty good. All that information is in the manual and even online. कोई और specific कुछ और सवाल? You are neither holding my hair or mouth nor. Daddy wants to know. So daddy walker syndrome most of the time comes with intellectual disability. They have definite impact. Yeah, there can be a possibility. I hope all of us know. Right. It can be at any time he can be diagnosed. It's just about the awareness that a parent took the initiative. By the way, there can be multiple types of dysmorphism, which gives the indication to a parent or a doctor that this child should go for some kind of testing. Down syndrome बहुत famous हो गया क्यों? क्योंकि उसके बारे में काफी अच्छी publicity चली. तो सबको पता है कि Mongolian eyes होंगे, silent freeze होगा, low muscle tone होगा, classic foot होगा. लेकिन very true. Also, they are very loving. They are very lovable. Yeah, very lovable. Same with Prader-Willi syndrome. Prader-Willi syndrome के पास में again थोड़ा low muscle tone होगा, थोड़ा classic type का body होगा, एक peculiar smile रहेगा चेहरे के ऊपर Prader-Willi syndrome में. ऐसे Dandy Walker में उनकी walking थोड़ी सी different रहती है. तो depend करता है. कई बार neurologist, अच्छे pediatric neurologist आपको नहीं भेजते हैं syndrome की evaluation के लिए. क्योंकि आप किसी ऐसी चीज का नाम जान के भी क्या करेंगे जब उसके सोल्यूशन के लिए सेम चीजें हैं जो मैं और आप ऑलरेडी करें. So some parents are very curious. They would love to know कि मुझे करना क्या है. They want to go ahead and find out. Knowing the syndrome helps you in prognosis. Rate of recovery कैसा रहेगा वो जानने में थोड़ी help हो सकती है. But beyond that, not much of help. Okay. Yes. BBIT is anyway not a diagnostic. No, it's a diagnostic tool for IQ. For And for ADHD and for SND. Okay. बोलिए सर. नहीं, not bad. You all have this? Yes, sir. आपके पास बेड है? Yes, sir. निकालिए. टाइम है. हेलो, what we do is why don't we do this? कल से जो लोग आज तक हैं और आज सुबह पुजारी को सुना, let's take this 15 or 20 minutes to say how much have you understood or learned till now. How is your daily practice going to be different आज के बाद? मैम वीडियो डायलॉग कर लीजिएगा ना. Let's look at the larger what? Okay, maybe sir has a nice. नहीं what? नहीं बोले ना. See, सवाल है बोले को पूछिए. See, let's not forget the focus on the WhatsApp. Okay. तो आज के 3 दिन के सेमिनार के बाद how will your work be different? At least आधा पेज या एक पेज तो सब लिख सकते हैं. देखो. Let's write that. Let's use the time. Jadi has finished before time. Very good. है ना? भाई लाइक्स और थोड़ा कर दें. हाँ. बढ़ा दें. We really want to know how will your work be different? जो भी आप करते हो, एडवोकेसी करते हो, स्पेशल एजुकेशन करते हो, let's collect those pages. आप दोनों क्या लिखोगे बता. कल की एक्सपीरियंस नहीं, कल की एक्सपीरियंस नहीं, जो एस्केप है. हाँ, पीडीएफ है इसमें करो ना, डाउनलोड करो ना, उसमें पीडीएफ खोल. बढ़िया. यस प्लीज. इसमें दिख रहा है वैसे.
PDF You don't select those papers and then if some of you have the confidence, come out there and say. लेके के बाद वर्किंग ग्रुप में जो मैंने डाला है ना बस आप रिसोर्स पर्सन है देखो PDF इसके बाद हाउ विल खुल रहा है, यू बढ़िया खुल रहा है, ये देख इधर देख खुल रहा है, तुम इसमें खोलो ना। लिखिए तो अच्छा होता है, हम कलेक्ट कर लेंगे ना, हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन रहेगा, बोलिए तो यू आर मोस्ट वेलकम। लिखने के बाद यहाँ आके बोलिए मोस्ट वेलकम है, नहीं बट हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन रहेगा भाई पार्टिसिपेंट्स के जो लास्ट डे पे लेते हैं ना, देखिए क्या होगा, थर्ड डे पे आखिर में एक फॉर्म भरवाएंगे, उसको हम अभी ला रहे हैं, राइट? थोड़ा कंस्ट्रक्टिवली सोच के लिखिए कि आपके रोजाना कामकाज में क्या फर्क है। खोलो हाँ इसमें, अरे तुम ये खोलो मैं दे रहा हूँ। वर्किंग ग्रुप में मैंने, ठीक है सर वर्किंग में नहीं है, रिसोर्स पर्सन नहीं है। रिसोर्स पर्सन नहीं था, फिर से खोल और तैयार भी हो जाएगी आप में से जो यहाँ आके बोलने को तैयार है, मोस्ट वेलकम, किसी भी बैकग्राउंड से। देखो अब मैं जो भेजा Come and share what you have written. See, this is the moment for reflection for all of us. Can I have it? You know, है अभी आपके यहाँ से नहीं आया। आलोक जी कुछ प्राइज दे देंगे? हाँ हाँ हाँ? देंगे, हाँ जो हम रिसोर्स पर्सन को प्राइज देंगे हाँ, वो प्राइज उनको भी दे सकते so जिसका अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन हो, है ना, एक दो या तीन प्राइज भी पॉसिबल। वाईफाई कनेक्ट करवा लो। आप लिख तो रहे हो कि देख तेरे को इसका वाईफाई पे क्यों मेरे में you nothing. You came in today. Oh, you are here to present. So what? You were there. No, Alok and I are also right. रागी का नहीं तो लिखे ना। ना लोटस टेन द अमेरिकन Oh, American rules. Okay. Whatever you have heard. Right. See, let's be frank. The whole talking, the idea, putting you together, bringing you together is essentially for reflection. हम एक दूसरे को information share. That's why I'm keen on BDIT, finance specific. That's okay. But the whole idea is for reflection. कि हम जो अब तक कर रहे हैं, उसको क्या कुछ अलग तरीके से बेहतर कर सकते हैं. ये मौका है reflection का. In fact, resource persons would be better. ये खुल जाएगा। अब है आगे अब खुलेगा 21 पेजेस में। खुल रहा है ना ये मैडम बोलेंगी ना पहले सबसे. One volunteer is here. अच्छा इस दौरान जो आप लिख रहे हैं वो जरा एक पेज फाड़ में गुप्ता जी को और आलोक को हमें थमा भी दीजिए जिससे हम लोग देख लें. जब आप चाय के बाद आएंगे वापिस तो हम प्राइस डिक्लेयर करेंगे ना. डिक्लेयर of course right. Yeah, you go right in there. optional Optional. even you can write negative part and Of don't write course. it. Of course. If you don't want to expose yourself कि मैं किसी को गुस्सा निकालना चाहता हूँ Anonymous भी permitted है. Negative भी permitted है. लेकिन हाँ अगर anonymous भी permitted है, we declare price anonymous. yes Right. definitely We say price goes to anonymous. it happens मतलब we should The reflection is very important. In fact, ये इत्तेफाक से निकल आया. I sincerely believe that in any event ना, event के end में मतलब नहीं करता. Mid course reflection. Please. वही करता. नहीं वो क्या इंडिया में ये मेथड भी है ना, तो सबको सपरेट ये क्या बीच में भी दूर आ गया. ये मल्टी मोड प्रेजेंटेशन होना चाहिए उसके बाद में
तो एक volunteer को verbally कहने को तैयार है. Anybody else who is keen to comment to very We can start from here. anyone else? Three. जो लिख चुके हैं कृपया दे दीजिए. नहीं वो तो नहीं देगा लेकिन 1, 2, 3. Anyone else who is keen to get up and say? Easy enough. Okay. Yeah, we can start. Yes, ma'am. Yeah. Oh, she got right. I would be candid and I am here only for the past शायद मैं 1 घंटा बैठी थी आज किसी और पर्पस के लिए आई थी बट बहुत बहुत थैंक यू कि बहुत कुछ सीख के जा रही हूँ. मेरे 2 रिफ्लेक्शन है. एक इन कैपेसिटी ऑफ एन एजुकेटर हूँ टीचर ग्रेड 11 एंड 12 एट स्कूल लेवल. बहुत ही बेसिक साइकोलॉजी. सबसे पहले तो जो भी डॉक्टर पूजा ने लाइवली एग्जांपल्स दिए हमें बहुत ही ह्यूमर के साथ विट के साथ वो जरूर क्लास में लेके जाना चाहूंगी क्योंकि उससे जिस तरीके से मैं कनेक्ट कर पाई जो कि मैं बाकी अभी बेसिक लेवल ऑफ स्टडी से बहुत सालों से कनेक्टेड हूँ क्योंकि कॉलेज छोड़े बहुत जमाना हो गया, मास्टर्स करे बहुत जमाना हो गया, पर पढ़ाते हुए 10 साल हो गए. तो जिस तरीके के लाइवली एग्जांपल्स लेके जा रही हूँ, I would want to incorporate that in my class with my new learners so that I'm able to ignite them and motivate them further to take up psychology at higher levels. And the other thing that I felt was, when you connect brain functions with behavior, and because usually we do that the other way. When we connect brain as the pivotal point and take it to behavior, that helps us understand concepts even more. This is again my reflection. Another reflection came as a practicing counselor. Yes. Value. Can I elaborate on that a little? He's quite right. See, हम लोग जो behavior देखते हैं कि दूसरे में बच्चे में उसको शायद थोड़ा explain करते हैं, सोचते करते हैं ऐसा हो रहा है. What if I might take that step further? In our actual work, what we should be doing is किसी एक क्लाइंट ने किसी एक व्यक्ति में बिहेवियर देखे या ग्रुप में आपने देखा कि 10 बच्चों में ये बिहेवियर देखा. Try and understand the great science behind it. जितना भी available evidence है. But take it back to behavior. So not just unidirectional, but understand the brain science and then apply it to what you do. सर इसमें स्टैम्प बनाने के लिए बहुत थैंक यू क्योंकि मैं तो बहुत ही थैंक यू सो मच. दूसरी मेरी रिफ्लेक्शन है एज अ प्रैक्टिसिंग काउंसलर. मैं पिछले 10 साल से काउंसलिंग की प्रैक्टिस कर रही हूँ. बहुत अच्छे स्कूल्स में काम करने का मौका मिला, बहुत ही जहाँ पे काफी फन, बहुत कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, मैनेजमेंट से हमेशा encouragement मिलती है. तो वहां पे अक्सर देखा जाता है सर ने वर्ड यूज किया था बाबूगिरी करने नहीं आए. एक सर्टिफिकेट एक डायग्नोस्टिक लेवल लेके बहुत क्या मिल जाएगा, ज्यादा से ज्यादा एक स्लाइड मिल जाएगा, रीडर मिल जाएगा, प्रॉम्प्टर मिल जाएगा, उसके आगे का क्या. सो आई थिंक हमारा रियल रोल इन, आई थिंक आप जिस भी कैपेसिटी में बैठे हुए हैं, हमारा रियल रोल वो है जो बच्चा आगे जाके लाइफ में करता है. तो वो बात हमें अपने वर्क डेस्क पे हमेशा याद रखनी चाहिए. हमारे लिए वो एक काम है. हमारे पास रोज कुछ केसेस आते हैं, हमें उनको क्लोजर देना होता है, उनको कहीं लेके जाना होता है. बच्चे हमारे पास आते रहे, ये भी एक बहुत बड़ी चीज है. एक बार और बात नहीं आई करी हुआ है. मैं आपके ज्यादा साल के साइकिल के अनुभव से एक चीज और बताओ तो कंटिन्यू फॉर व्हाट इज सॉरी एक बात और समझे. आप शायद एक दिन में 10 बच्चों को या 10 मरीज को देखते हैं, हम लोग 50 मरीज को देखते हैं, 25 को देखा. जैसे हमेशा हमारे क्लिनिक से कहता है साइकोलॉजी, सोशल वर्क और नर्सिंग and I'm extending again nursing. Working of course we are not like I said a very challenging profession. हमें मानव सह वो काम मिला है फॉर्चुनेटली है और किसी व्यक्ति को परिवार को मदद कर सकते हैं, जो अपने आप में बहुत अच्छी बात है. But the point that I want to bring is this. वो जो एक क्लाइंट या फैमिली के साथ आज वो 10 मिनट या 20 मिनट आप जो बिता रहे हो ना, आपके लिए इट इज 9 to 5 में 10 ऐसे काम किए, लेकिन उस व्यक्ति के जो फैमिली के लिए वो 15 मिनट सबसे इम्पोर्टेंट. वो 15 मिनट या वो 3 सेशन उसके आने वाले 5 साल बनाए. So you have to be very careful. It's a burden. It's a moral burden. कि नर्सिंग को हम एक हेल्दी एटीट्यूड रखें, but
साइंस से बढ़कर आप कोई बात करने लगी है कि the philosophical basis of what we and for each client, each family, those 15, 20 minutes or those 3 sessions actually make or break their happiness, well-being and life. गुड मॉर्निंग और क्वेश्चन ये है कि हमने जो भी अभी 2 दिन में सीखा है yesterday and जो अभी हम सुन रहे थे बात कर रहे हैं क्या सीखा और हम उसे कैसे अपने फील्ड्स में अप्लाई करेंगे सबका अपना अपना एरिया ऑफ वर्किंग मेरा नेचर ऑफ वर्किंग स्लाइटली डिफरेंट तो मुझे लगता है कि अभी तो इट इज nothing too very specific in this regard. Lekin it is the first step to go deeper, to go beyond the limits, to think and read and study in better ways, which I was willing to go for. मेरा area of cognition रहा, मेरा personality रहा, we are more towards the academics. तो बहुत field में काम करने के लिए हमारे पास नहीं है. We do handle. I am the teacher educator basically, so contextually dealing with the university going PG level students. At present, I am teaching MAT special education, BEd, MAT special education, PhD, MPhil. So the entire works of my area will be the studying further, going deeper, doing research, and enjoying the things in life because. These areas are very much not in the concern of the educators. कोई बात नहीं करना चाहता डीपर कोई चीजें देखना ही नहीं चाहता और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं यहाँ कल के और आज के प्रोग्राम में लेकर जा रही हूँ सिंसियरिटी आई एम वर्किंग इन द सिस्टम फॉर लास्ट 22 इयर्स और 23 साल की मुझसे लेक्चरर हूँ मैं और सरकारी सभी दिल्ली तो सारा कवर्ड है सारे दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट कवर है जोन कवर है और एससीईआरटी एनसीईआरटी सीबीएसई मिनिस्ट्री लेकिन जो सिंसियरिटी से यहाँ काम हो रहा है मतलब मैं अपनी लाइफ में कुछ भी करना चाहती हूँ तो इस चीज को मैं कैरी फॉरवर्ड करना चाहती हूँ पहली चीज कि दैट सर इज प्रेजेंट हियर एंड ईच एंड एवरी लेक्चर ऐसा होता है कि जो ऑर्गेनाइजर होता है वो बस स्पीकर को खड़ा किया भाग गया वो इंफॉर्मेशन होती है तो ये इट इज ग्राउंड रियलिटी जो हम सिस्टम का हिस्सा है फ्रॉम द लास्ट 17 इयर्स आई एम वर्किंग इन जानते हैं मोटी मोटी बड़ी बड़ी सैलरी हम लोगों को मिल रही है क्या दे रहे हैं सिस्टम को ये बड़ी दुखद स्थिति है एंड बिफोर जॉइनिंग बिफोर 17 इयर्स जॉइनिंग जामिया आई वाज टीचिंग एट दिल्ली यूनिवर्सिटी I got history of Indian education, this and that. सीआरटी में भी मैंने 2 साल काम किया, बहुत रिसर्च किया, सब कुछ किया. लेकिन सारा सिस्टम रोने पर आया हुआ है कि हम सरकारी नौकरियां चाहिए. जो तारीफ की गई उसके वो नए नसीब है लेकिन उसके लिए नहीं उससे पहले जो बात की गई उसके लिए करके बहुत अच्छा है लेकिन आपकी सोच बदलेगी तो आपके ट्रेनिंग के द्वारा बहुत सारे स्टूडेंट्स की सोच बदलेगी राइट सो यू डू नॉट हैव अ डायरेक्ट इंपैक्ट एक मैं डायरेक्ट थैंक यू सो मच एक आई वांट कनेक्ट इंसिडेंट भी आप जरा बताएं जो हम बात कर रहे हैं बाकी जो लोग आए उनसे पहले भाई तीन दोस्त गए कार ड्राइविंग सीख ठीक है जी कोई इंस्ट्रक्टर से भैया क्या पैसा लेते हो तो यार ये तो पता चले कि आप लोग कितना जानते हो कार ड्राइविंग तो पहले का यार मैं तो कब से चला रहा हूँ जैसे दिल्ली में और इंडिया में होता है 12-13 साल उम्र से चला रहा हूँ आई एम एलिजिबल फॉर लाइसेंस सो आई नो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट 90% मुझे अरेंजमेंट्स था तो कहता है फाइंड आउट दूसरे से पूछा कितना जानते हो कहते हैं about 50% बाकी 50% you have to train so he said क्या कहोगे 5 लाख से ज्यादा है काम 10,000 ओके नहीं सॉरी यार एक्टिंग इसलिए कहता मैं तो बैठा नहीं कभी स्टीयरिंग व्हील पे तो पूरा दुनिया मुझे सिखाना तो कहता है 1,000 तो पहले वाला पढ़ा एनी रीजन सर जो लर्न किया उसको ऑनलाइन करवाने में ज्यादा टाइम लगता है तो इफ यू डोंट लाइक अपने हम सबके लिए लागू होता है आपको देश नहीं दे रहा हूँ ज्ञान नहीं दे रहा हूँ जैसे कल कहा गया था
लेकिन हम सबको हमारी प्रैक्टिस में, हमारी आदत से जो शायद अनडिजायरेबल चीजें दिमाग में बैठ गई है, प्रैक्टिस है, उसको अनलर्न करने की भी जरा यहाँ कोशिश करिएगा. Learning new things is very good, but unlearn some of the things, and I got the hint of that in what Mela was saying. But very nice, thank you. Go on, by volunteers. Yes. अभी रिसेंटली मैंने 2 रिसर्च में काम किया था. एक प्रॉब्लम बिहेवियर डिक्रीजिंग, एक इंक्रीजिंग बिहेवियर डिक्रीजिंग. अभी जो हमने सेशन किया और उससे पहले जो कल जो हमने सेशन में था, उसके बाद आज मुझे अभी जो चीजें आज से जो मैं अपनी काम में जो प्रैक्टिस में इंक्लूड करूंगी वो ये चीज होगी कि जहाँ पे हम पूरा टेस्ट कर देते हैं, पूरी असेसमेंट कर देते हैं, हम साइकोलॉजिकल टेस्ट करते हैं, कास्ट करते हैं, ऐसा करते हैं, इतनी सारी चीजें करते हैं, बट हम पेरेंट्स को नहीं बताते कि कौन से डोमेन एरिया में कौन सी चीज में हमें क्या प्रैक्टिस फोकस करना, कौन सी नीड्स को हमें फोकस करना चाहिए, क्या बच्चे की नीड्स. अभी जैसे मैम ने बताया कि हमें कल भी मैम ने हमसे पूछा कि मैं कुछ एक्शन करूंगी एंड देन यू हैव टू टेल मी which brain lobe is functioning or working. तो वो चीजें अभी कल मैम ने इस पेरेंट ने बोला था कि they were working on coordinating activities or coordination activities. तो अभी जो मैं सभी को बोलना चाहूंगी और मैं खुद भी ये चीज इंक्लूड करूंगी अपने प्रैक्टिस वर्क में, जो भी हमें पता है कि हाँ इस डोमेन एरिया में बच्चे के इशू है, प्रॉब्लम है, जहाँ पे वो फेस कर रहे हैं कुछ डिफिकल्टी, तो हमें अपने इंटरवेंशन प्लान्स में अपने फोकस एरिया को, बच्चे के फोकस एरिया को ध्यान में रखते हुए कुछ एक्टिविटीज हम इंक्लूड करनी, क्योंकि हम प्रॉब्लम बिहेवियर को फोकस करते हैं लेकिन हम स्किल बिहेवियर को फोकस नहीं करते. तो बिहेवियर में 2 चीजें होती हैं, प्रॉब्लम बिहेवियर, स्किल बिहेवियर. वी नीड टू अंडरस्टैंड बोथ आर राइट, बोथ आर इक्वल टू फोकस. हमें दोनों पे फोकस चाहिए, ना कि सिर्फ प्रॉब्लम बिहेवियर. बच्चा अटेंशन सीक कर रहा है, बट क्यों कर रहा है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट. बच्चा एस्केप कर रहा है, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड बच्चा क्यों एस्केप कर रहा है. मे बी देयर आर सम डिफिकल्टीज फेसिंग इन मैथमेटिकल्स, और मे बी उसका क्वेश्चन इंटेलिजेंस बहुत अच्छा हो, वी नीड टू focus on that area also. That's my वहां पर जाओगे तो किताब होता है, तालियां बजाते हैं, 5 मिनट में तालियां, ये तो कहां तालियां बजाओ यार. वेरी नाइस. बट आई वांट टू अगेन पिक अप व्हाट आई सेड अर्लियर, पार्टिसिपेटरी अप्रोच. जैसे मैडम से बात हो रही थी ना, see, take your client, take the person, take the child, take the family, take the parents and your partner. और कल की शर्त, जैसे कल मैंने कहा था, मेडिकल डॉक्टरों से सीखने लायक पूछो तो सीख लेंगे, लेकिन मेडिकल डॉक्टर कुछ चीजों में मत करिए, ये मेडिकल डॉक्टरों की आदत है. हमने कह दिया बात ऐसे करो. See, that's wrong. That is wrong. In human existence is wrong. Please understand. We all want participatory approach. Client को साथ लेके चलिए, एक और काम हमारे पास आज जो है कि पूरा समय बहुत अच्छा है. I know. खास बोर्ड. You don't want to say anything. Good morning, everyone. You don't want to say. I'm a legal psychologist. I'm a legal psychologist. तो मैं पहले तो स्टूडेंट्स बताना चाहूँगी कि मैं खुद एक SMG पर्सन हूँ. मुझे इस हेल्प किया है. तो मुझे अगर आप आज पूछेंगे इसका परसेंटेज निकाल दो तो मेरे हाथ पैर भी काम जाएंगे. सिर्फ 9+7 अगर आप मुझसे पूछेंगे अभी मैं नहीं बता पाऊंगी. सो मैंने अपने चाइल्डहुड में अपनी इस डिसेबिलिटी से बचने के लिए एक टेक्निक यूज की थी. मुझे नहीं पता, ठीक है, हम नहीं बता रहे, और मेरे बड़े भाई लोग पीटा भी है. मैं जानती हूँ मैंने अपने 10th कैसे पास किया. मैं सच में जानती हूँ मैंने 10th कैसे पास किया. मैंने कसम खा ली थी कभी 10th पढ़ूंगी, लेकिन साइकोलॉजी में फिर मुझे स्टैटिस्टिक्स पढ़ना होगा. और उस समय मेरी मॉम और डैड और दुनिया को नहीं है, बट आई रियली मेरी मॉम को बहुत मिस करती हूँ. उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकले. तो मैंने एक्सेप्ट करना शुरू किया पहले तो कि हाँ मुझे प्रॉब्लम है, आई थिंक मैं अभी भी काउंट करती हूँ. मुझे ऑटो वाला छुट्टी देता है तो मैं काउंट करती हूँ, देखता है इतनी बड़ी लड़की स्टिल काउंट कर रही है. बट ठीक है, एक्सेप्टेंस आया. जब इस प्रोफेशन में आई तो मैंने बहुत सारी पेंटिंग्स देखे हैं. मैंने मतलब
इस दिस कैलेंडर की बात मैं लंदन में पढ़ने की है और मैं वापस आई यहाँ पर मैंने अपना एमपी किया है, मैं बहुत दिया हुई है इसके बाद इसी के लिए मैंने बहुत काम किया है बट जैसे कि मैंने जितनी पेशेंट देख सको बहुत कनेक्ट किया है मतलब कनेक्ट किया लाइक कि हाँ ये महसूस कैसे कर रहा हूँ कहते हैं ना बिना ब्रश बिना ब्रश से यहाँ की बात करता है आपकी लाइफ पूरी बहुत बढ़िया है। नहीं सर मैं आपको वही बता रही हूँ सो बेसिकली जब मैंने यहाँ पे पेशेंट देखना शुरू किया तो मैंने जो अप्रोच रखी थी वो सेम थी कि पेशेंट्स की जो कमियां हैं उसे फोकस ना करने की बजाय क्वालिटी से फोकस किया इनफैक्ट उनके पेरेंट्स को भी अलग से सेशंस दे के मैंने कुछ एक्सप्लेन किया कि बच्चे की प्रॉब्लम्स क्या है और उस पर कहाँ फोकस कर सकते हैं और कहाँ पर हमें वर्कआउट करना है लेकिन एक ब्रेन समझने के बाद में इस सेमिनार का हाँ मैं सॉरी बता रहा हूँ ब्रेन को समझने के बाद में अभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं पेरेंट्स को और बेटर तरीके से बता पाऊंगी कि ब्रेन का कौन सा हिस्सा है जो प्रॉब्लम दे रहा है कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर है कौन सा न्यूरो केमिकल है डिस्टर्बेंस दे रहा है कहाँ पे हमें मेडिकेशन की जरूरत है और क्यों है कब तक चल सकते हैं इसकी इंफॉर्मेशन मुझे सेमिनार से मिल रही है एंड पूजा मैम ने जिस तरीके से ना बहुत सिंपल एंगल यूज किया है कि वो हॉरिजॉन्टल है ये वर्टिकल है ये मैं इस तरीके से explain अगर अपने पेरेंट्स को करूंगी तो मुझे लगता है इन्होंने कहा कि एक दो चीज समझे कहाँ पे क्या चाहिए कंटेंट ऑफ नॉलेज दो तीन दिन में कोई सेमिनार आपको नहीं दे सकता लेकिन आपकी अप्रोच अगर बदल मैं वो आई वाज लुकिंग फॉर दैट इनडायरेक्टली कहा गया see the content of what Buddha is said somebody is very good but if your basic approach can change if you want to find out 50 more things about action said behavior का क्या basis है तो approach बदले तो वो important है that one was very सर जो आपने बोला अप्रोच वही मैं शेयर करना चाहती हूँ जो कल मेरे को समझ आया था कि ब्रेन बहुत ज्यादा ठीक है बहुत मतलब स्टॉप लगता है सबको लेकिन कल मुझे पता चला कि नहीं वो हम पढ़ सकते हैं और बस वही एक अप्रोच मेरी यहाँ पे चेंज हुई है बड़ा हुआ नहीं है यस और सर एक चीज और सर ने जो बोली कि हमें वीकनेस पे नहीं स्ट्रेंथ पे ध्यान देना है और जो पॉइंट्स हैं उन पे हमें ये देखना है कि उसमें किसपे उन्होंने कौन से टॉपिक पे बहुत स्ट्रांग है उन पे हम काम करेंगे तो मे बी हम बहुत हेल्प कर सकते हैं उसमें हम एबीसी यूज करेंगे तो सारा ही काम सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो ब्रेन है या जो डिसेबिलिटीज है या जो कमियां हैं वो आपको हजारों लोग बता देंगे आपके पास सर्टिफिकेट्स आ जाएंगे द मेन थिंग इज टू वर्क विद द चाइल्ड with find out and whatever it's no matter how many books you have read but when it comes to work तो आपको लगेगा कि सारी कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं करेंगे तो वहां पे इस टाइप की जो वर्कशॉप्स है वो हेल्प करती है हमें कि हमें कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है टू सर्दियां चल रही है ना अब लोग वार्म अप हो रहे हैं उन्होंने कोई बोलने को तैयार नहीं अब सब वार्म अप हो रहा है जब चाय ठंडी हो रही है Good morning to all. My name is Sapur. I'm from Nepal. I have been applied in clinical psychology from Related University. I just want to share some experience, not personally, but I'm very thankful to Pooja ma'am कि उन्होंने आज एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। खासतौर से हुआ है जहाँ पर उन्होंने ये कहा कि टीचर लिखे जाती जो कहते हैं कि नोट करो एकदम से हम लोग नोट करते थे दूसरी टीचर एंट्री करते थे तब करते तो ये बात ऐसा लगा कहीं ऐसा में ऐसा नहीं मेरी कहानी सुनी मेरी कहानी सुनी तो मैं जानने से पहले और स्पेशल एजुकेटेड लीग में ये कहना चाहूंगा कि प्रोजेक्ट मैंने उसके करना भी क्या लास्ट मैंने कहना चाहूंगा कि मेरे को बड़ा अजीब लग रहा है यहाँ पर मैंने जो लिया है आई कीप ऑन गोइंग टू डिफरेंट प्लेसेस फॉर लेक्चर्स और लगभग पिछले 51 साल से कर रहा हूँ
ज्यादा उम्र भी नहीं है, सिर्फ 75 साल है। ओके, तो मैं यहाँ से जो अभी सीखा है, जो नया एडिशन हुआ है, आई बी डिस्ट्रीब्यूटिंग इट वेयरएवर आई गो। तो मेरी आपसे यही गुजारिश होगी कि आप यहाँ जो भी सीख करके जा रहे हैं, जो भी लेकर के जा रहे हैं, अपने कोलीग्स के साथ में, जिन पेरेंट्स से आप मिलते हैं, उनके साथ उसकी शेयर जरूर करिए एंड शेयर इन द राइट वे। वो ज्यादा बेहतर होगा और अच्छा होगा हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए। थैंक यू सर। We'll take for only for 7 minutes. Okay, go and come. Start. 2 मिनट जाने आने में 5 मिनट चाहिए। 9 मिनट। आपके स्टाफ को लाने की व्यवस्था किया था।